हम स्कूल से ही पढ़ते आए हैं नेपाल के बारे में कि हमारी it's like a sister, you know, this country is like a sister to India, and the first thing that I ever came to know about Nepal was obviously Mount Everest, right? नेपाल से इंडिया जाते वक्त आप क्या लेके जाना चाहते हो, कैसा एक्सपीरियंस लेके जाना चाहते हो? बहुत सारा प्यार और मुझे पता है वो मिलेगा मुझे यहाँ पे because I can feel it all around me right now. बहुत सारा प्यार और बहुत सारी blessings लेके जाना चाहूँगी लॉर्ड शिवा की. यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ. Thank you so much for inviting me. Very thankful to your organization. This is Nepal World Ribbon Entertainment. You, the chair, and everyone else in the team of Mrs. Nepal World for inviting me and giving me this opportunity to come to Nepal for the very first time in my life. I've heard so much about this place but never really got a chance to visit. And now that I did in this beautiful weather of November and the wonderful city of Kathmandu, it's beautiful. And also thank you बोलना चाहूँगी Mrs. Nepal World का because एक ऐसा platform married women के लिए create किया है where they can not just come out of their shell and showcase their talent but actually do something fruitful for the society. There's a lot of potential that married women have, and pageants like Mrs. Nepal World and Mrs. World give us that space to actually create a voice that can be heard throughout the world. So thank you for giving the women of Nepal, this opportunity and letting me also see what women of Nepal can do. Thank you so much. नेपाल के बारे में क्या कहते हैं? Well, हम स्कूल से ही पढ़ते आए हैं नेपाल के बारे में कि हमारी it's like a sister, you know, this country is like a sister to India, and the first thing that I ever came to know about Nepal was obviously Mount Everest, right? And then a few weeks earlier when Arjun was telling us about, you have to come to Kathmandu with your mom. And I said, so what are the places we are visiting? And he said, oh, there's going to be a lot of things for you. And my grandmother says, Sargam, you have to go to Pashupashinath. And I'm like, okay. And he says, yes, it's a very old, and it's a heritage temple, of course, of Lord Shiva. And if you know, my mother is a Kashmiri, so Kashmiri people really worship and revere Lord Shiva a lot. So of course, all of those things came together, and I think this trip was in my destiny, especially with my mom. आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ before Mrs. World, after Mrs. World? There's so much. मैं बता नहीं सकती कि कितना परिवर्तन आया मेरी जिंदगी में. सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि my father is he's very passionate about the fact कि उनकी बेटी लाइफ में कुछ बड़ा करे. And I was this average student in school, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था मुझे कुछ अलग करना है जिंदगी में, पर पता नहीं था क्या करना है. और इस प्लेटफॉर्म मिसेस वर्ल्ड जीतने के बाद now my dad says that you've given me everything that I wanted in life, now I can die a happy man. तो ऐसी बात जब पापा बोलते हैं कि अब मैं खुशी मर सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे वो सब दे दिया जो मुझे चाहिए था. My husband is known by my name now. Earlier I was Lieutenant Commander Aditya Manohar Sharma's wife. Now he's Mrs. World's husband. So that's a big change. And मेरे घर के बाहर मीडिया रहती है हर टाइम, एंड कभी मम्मी के इंटरव्यूज हो रहे हैं, पापा टीवी पे आ रहे हैं. These are the little happiness, छोटी खुशियां हैं जो लाइफ में मिली हैं. बट सबसे बड़ा चेंज आया है मेरी सोच में. हम सोशल मीडिया पे काफी वक्त बिताते हैं, और मेरी ये पूरी जर्नी सोशल मीडिया पे काफी औरतों ने देखी, इंडिया एंड इंटरनेशनली. एंड नाउ व्हेन आई वन I get messages from women, married women, that जब आप जीते हमें लगा हम जीत गए. जब स्टेज पे आपकी आंखों में आंसू थे हमें लगा हम रो रहे थे खुशी से.
So it kind of builds this big family where one woman supports the other woman, and it creates a bigger circle of people supporting each other and doing something better for themselves and for the society. So I think that's the biggest change that came. इंडिया नेपाल के रिश्ते के बारे में आपने कहा सिस्टर है, उसका कल्चर भी सेम है। Yes. जो मैरिड वुमन होते हैं उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे प्रेजेंट में सर्वाइव करना। Of course. आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा डिफिकल्ट आता है वो नेपाल इंडिया में बेसिकली? इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी यू आर मदर एंड यू आर अदर बिजनेस वुमन, आपका क्या ये दोनों होते हुए भी तीसरा जो है बिजनेस का तो टास्क है, कितना दिक्कत हो रहा है कैरी करना? So first of all, I'm not a mother. But yes, I do have a little dog जिसको मैं अपनी बेटी जैसा ही मानती हूँ. But yeah, I'm not a mother as such. But yes, मैं पिछले 6 साल से मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मैंने काफी टाइम बिता लिया है as a married woman. I was working also. मैं पहले एक स्कूल में टीचर थी तो बच्चों के साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ. Now I am into this entertainment business of course, जहाँ पर हर दिन कुछ नया कुछ अलग होता है. Especially जब मेरी मिसेस वर्ल्ड की ट्रेनिंग चल रही थी, उस दौरान वो जो 6 महीने थे, मैं अपने घर को हार्डली कभी देख पाती थी क्योंकि सुबह निकलती थी घर से ट्रेनिंग के लिए और रात को वापस आती थी. मॉडलिंग चल रही है, फोटो शूट्स चल रहे हैं, ग्रूमिंग सेशंस चल रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर मिसेस नेपाल वर्ल्ड इज आल्सो प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दीज ट्रेनिंग लिटिल ग्रूमिंग सेशंस टू देयर कंटेस्टेंट्स एंड yes, it takes a toll on your life. ये एक it's a very difficult road, especially for married women, क्योंकि जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, especially लड़कियों की, तो अपनी मम्मी के ऊपर लीन ऑन कर लेती हैं ये सोच के कि ठीक है मम्मी सब संभाल लेगी, खाना बन जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे, रूम सेट कर दिया जाएगा. बट जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हो और when you go home and you see that खाना नहीं बना तो खाना भी बनाना है. All of those little things kind of take a toll on your life. But I would still say that it is very important for partners, husbands, mother-in-laws, father-in-laws, especially हमारी ये जो एशियन सोसाइटी, नेपाल और इंडिया जैसी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार हमारा सपोर्ट सिस्टम बने. हम अकेले नहीं कर पाएंगे एंड कर सकते हैं बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट. अच्छा होगा अगर फैमिलीज मिलके हमें सपोर्ट करें क्योंकि अल्टीमेटली ये ड्रीम जब पूरा होता है तो सबके चेहरों पे खुशी आती है एंड खुशी बांटने से बढ़ती है. तो आई थिंक अगर पेरेंट्स और इन लॉज मिलके सपोर्ट करें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. आपका टाइम तो अब तो समाप्त होने जा रहा है क्योंकि अब तो 1 महीना बाकी है. Yes. और आपने इस टाइम में क्या किया, वीडियो पसंद किया? Sorry? आपका जो 1 ईयर जो आपने रनिंग किया इसमें आपका इम्पोर्टेंट काम क्या क्या था इस टाइम में? So there are a lot of things that we do as Mrs. World Organization and even when I was Mrs. India तब भी तो सबसे पहला था कि जब हम अलग अलग स्कूल्स में जाते थे, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पर ना सिर्फ गर्ल्स पर बॉयज को भी हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं बट मेनली आवर फोकस इज ऑन सेल्फ डिफेंस फॉर यंग गर्ल्स बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में ही नहीं दुनिया में हर जगह गर्ल्स जब घर से बाहर निकलती हैं तो एक हमेशा डर रहता है कि क्या वो घर वापस सेफली आएगी या नहीं. पब्लिक स्पेसेस में, बसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में वी ऑलवेज हैव दिस फेयर कि कहीं कोई छेड़ ना दे और कहीं कोई ऐसा कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ. तो दैट वाज वेयर वी गॉट इन टच विद वन ऑर्गेनाइजेशन जो लड़कियों को जुजुत्सु, मार्शल आर्ट्स जैसी ट्रेनिंग देते हैं और हम स्कूल्स सिखाते हैं. Then the other organization which Mrs. World supports is Victoria Voices. अमेरिका में ही नहीं बट इंडिया में भी एंड आई थिंक वर्ल्ड में और भी बहुत सारे कंट्रीज में ओपियोइड की जो एडिक्शन है
वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ड्रग एडिक्शन इज अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं ड्रग्स के यूज एंड अब्यूज से. सो वी हेल्प फैमिलीज कम बैक टू द सोसाइटी. हम उनको अलग अलग तरीके सिखाते हैं कि वो ड्रग एडिक्शन से कैसे बचें. हम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं यूएस में, इंडिया में एंड एवरीवेयर. We try and make sure that these families are rehabilitated. So these are the things that we do. In this time, how many countries you visit for this purpose? Oh my God, I don't even remember now. I've been traveling through and through. I don't even. मेरे bags हमेशा packed रहते हैं आजकल. So I think अगर मैं off the top of my head, I think 10 countries. Yeah. आपके बचे हुए 1 month आप स्पेसिफिक क्या करना चाहते हैं? Honestly बताऊं, मैं बहुत सारा रेस्ट करना चाहती हूँ. But no, I'm sure वैसा होने को नहीं मिलेगा. This month obviously I'm traveling. Now I'm in Nepal and for 1 day I'll be back in India for Diwali and then again I'm leaving for South Africa. And वहाँ पे 10 दिन बिताने के बाद I'm coming back to India again. I'm leaving for Peru. And so I really don't have any time to think and decide कि अब क्या करूँ मैं. But yes, during these visits, I try my best कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल सकूँ और उनसे जितना ज़्यादा empower कर सकते हैं हम अपनी तरफ से. At the end of the day, people think that हम कुछ बहुत बड़ी तोप हैं. We are not politicians. We are not the change makers. The only thing that we can contribute to the society is our voice, is our presence, is our social media presence. And of course, we can join organizations and help, hold hands with them and help them. But at the end of the day, I think these bigger people have to change the picture. आप नेपाल में नेपाल से इंडिया जाते वक्त आप क्या लेके जाना चाहते हो? कैसे एक्सपीरियंस लेके जाना चाहते हो? बहुत सारा प्यार और मुझे पता है वो मिलेगा मुझे यहाँ पे because I can feel it all around me right now. बहुत सारा प्यार और बहुत सारी blessings लेके जाना चाहूँगी लॉर्ड शिवा की because yes, I mean Shiva makes the world go round. Thank you very much. Thank you.